everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So friends, if you are also shortlisted for the interviews of BDL Bharat Dynamics Limited, this particular video might help you out to ace your interview, as I'm going to provide you a list of most expected HR questions along with the skeleton of answer, which might help you out to prepare your HR round in a very good manner, right? So let's get started and understand and discuss the various domain of HR questions for your BDL interviews. Let's get started, guys. So yes, this is Bharat Dynamics Limited and these are the most expected HR questions. This we are going to be cover self-introduction, strength, weakness, career goals, teamwork, situational behavior, and you should be aware about the BDL of course, technical relevance and industry awareness. Okay. So starting with self-introduction and personality. It maximum includes your introduction. Okay. Your basically like I can say hobbies and interest part. Why do you want to join BDL? What are you doing these days? And like how you handle conflicts. These kinds of like generic kind of essay, like questions basically. Introduce yourself. Why did you choose engineering as your career? Okay. What inspired you to apply for BDL? Okay. So yes, you can say that you are inspired by BDL's contribution to national defense and want to be a part of organization that develops cutting edge missile system of India's security. Okay. What three words best describe you and why? So आप कोई भी तीन या चार या जितने भी words आपको बोले जाएं, and when you're explaining yourself in that 3 or 4 words, you should be aware the meaning of that particular word as well. ठीक है? So don't bluff about your personality. Hobbies क्या हैं? Biggest achievement क्या है अभी तक? These are the generic self-introduction part. Talking about strength and weaknesses, greatest strength क्या है आपकी? You can align your strength related to a job profession. Can you give me an example of how strength helped in project or situation? Biggest weakness क्या है? ठीक है? And how are you working to improve this weakness? Criticism को कैसे handle करेंगे? Have you ever failed at something? आप कभी किसी चीज में fail हुए हैं? And क्या सीखा आपने? Means आपका कोई failure रहा है? Do you have any failure or any biggest failure you have faced in life? A situation where you turned a weakness into strength. ठीक है? अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग आपकी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रही है, यू कैन नॉट स्पीक पब्लिकली एज लाइक दैट एंड यू कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, सो यू कैन से that I have taken that small leadership roles and I have developed clear and confident communication. Okay? How do you handle tasks you are not good at? So this is about the career goals and motivation. Where do you see yourself 5 years from now? आपका vision क्या है? What are your short term goals? आपका mission क्या है? Why do you want to join the defense sector? Defense sector को क्यों join करना चाहते हो? ठीक है? And how does this role at BDL fit into your career plans? आपको क्या मोटिवेट करता है वर्क हार्ड करने के लिए? अगर आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं, आप BDL क्यों चूज करना चाहते हैं? आर यू प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज और सर्टिफिकेशन इन द फ्यूचर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉब स्टेबिलिटी एंड इज इट इम्पॉर्टेंट टू यू? जॉब स्टेबिलिटी होता क्या है? कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन, एंड येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, राइट? टॉकिंग अबाउट टीम वर्क एंड लीडरशिप. Have you worked in a team? ठीक है? After that I can say, have you ever taken a leadership role in a project? How do you resolve conflicts in a team setting? How do you ensure effective communication with the group? ठीक है? आप open communication channel आप use कर सकते हो, encourage open feedback, use clear concise communication. What role do you usually take in group project, leader or executive? Executive trainee or as a management trainee, what are your rules basically? Describe a time when you disagree with your team. How did you handle it out? How do you motivate your team members? What qualities make someone a good leader? Good leadership क्या होती है? Good leader के traits क्या होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए. Then situational and behavioral question, that is something very important part of HR domain to check, to analyze your psychological part. Right, whatever role you are going in BDL, MT or ET basically, that you need to be aware about कि आपका behavioral expect कैसा है. So that is something. What would you do if you were given a task outside your area of expertise? ठीक है? आपके basically manager ने assigns your unrealistic deadline, आप कैसे handle करेंगे? Right, that can be the question.
आफ्टर दैट आई कैन से इट आउट, व्हाट इफ यू मेड अ मिस्टेक इन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, आपने क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे मिस्टेक कर दी, आप कैसे टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे अगर आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। हाउ वुड यू डील विद वर्क प्लेस स्ट्रेस, कोई सिचुएशन जब आपने कोई मेजर चेंज क्विकली अडेप्ट किया हो, वहां पर आपकी अडेप्टेबिलिटी चेक होती है, राइट। नॉलेज अबाउट बीडीएल, सो भारत डायनामिक्स लिमिटेड क्या है, क्या जानते हैं आप उसके बारे में, चेयरमैन कौन है, दैट इज ए मधाराव, ठीक है, विच इज रिटायर्ड बेसिकली। What are the key products and services? BDL produces missile like Akash, Nag and anti-tank guided missiles, ठीक है। आप क्यों एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जो BDL है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसमें काम करना चाहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट, what differentiates BDL from private defense companies? BDL ensures strategic autonomy in defense production, work closely with DRDO and focuses on national security over profit. Are you aware about the recent projects or collaboration involving BDL? How do you think your skills and contribute to BDL's mission? Are you willing to relocate work in remote defense installations? So yes, these are the chair questions related to BDL. Talking about the field you are going in, technical relevance in industry awareness. How does your engineering discipline align with the work BDL does? ठीक है। कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल, एम्बेडेड सिस्टम डायरेक्टली डिफेंस के मिसाइल और टेक्नोलॉजी से अलाइन है, आप ऐसा बोल सकते हैं। व्हाट वाज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड हाउ इट इज रेलेवेंट टू डिफेंस टेक्नोलॉजी? यू नीड टू बी अवेयर। आर यू फेमिलियर विद मिसाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स? दैट यू नीड टू बी जस्टिफाई। आप अपने आप को कैसे अपडेट रखेंगे विद द लेटेस्ट इंजीनियरिंग एंड डिफेंस लाइक न्यूज, आप कह सकते हो। रिसेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बताइए डिफेंस सेक्टर में। हाइपरसोनिक वेपन्स, एआई इन सर्वेलेंस, ड्रोन स्वॉर्म्स, ठीक है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। हाउ वुड यू अप्रोच ए टेक्निकली चैलेंजिंग सिचुएशन इन वर्क, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट? अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, यू लर्न इन इंजीनियरिंग, जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाना हो, तो आप कैसे समझाएंगे उसको? आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन विच टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ BDL वुड यू लाइक टू वर्क, right? So yes, these are the major most expected HR questions in different domain which you need to be prepared. Don't forget to download this documentation from your PDF panel. Revise these questions along with the answers that has been already given and practice these questions with HR mentors and your technical mentors as well. You can have your mock sessions, snap sessions likewise, right? So yes, this is all about, more or less we have covered all the relevant expected HR questions related to Bharat Dynamics Limited. So whatever the role you are going for, like executive, like I can say trainee or engineer or like MT, basically you can prepare these questions wisely and answers are already given there. So all the very best, all the aspirants are preparing for the Bharat Dynamics Limited. Good luck.